पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत प्यार भरी Today is the eve of हार्दिक Pongal. शुभकामनाएं। So आज वैसे स्नान का भी महत्व है, तो दान का भी महत्व है। on this day, और there are दूसरी two बात, significance of this day. कहते हैं कि First thing, the सूरज purity, उत्तरायण की ओर आगे बढ़ता है, तो and the धीरे-धीरे second दिन thing बड़ा होता जाता of है। the giving. और तीसरी बात, पतंग उड़ाने का भी दिन है। On this festival, especially the kites are being flying in the sky, वे सभी को बांटते हैं, खाते हैं। and everyone is इसका मतलब है कि distributed. हमें Everyone संगठन में distribute the मधुरता का sweet व्यवहार करना है। of sesame and jaggery आज बाबा laddu. की मुरली, बाबा हमें बता रहे हैं कि मैं आकर के तुम बच्चों की कायाकल्प करूं करता हूं, Today, Baba says, I come क्योंकि and इस make your समय bodies immortal as चाहे वो kalpa कितने भी tree. धनवान है, लेकिन दुखी है। Baba says, how much ever you are rich, but you are in sorrow because this is land of sorrow. ताकि आधा कल्प तो हमें कोई दुख मिलता नहीं। Baba comes and makes our body immortal for half a cycle, आत्मा शरीर के माध्यम से and for बोलता half है, a cycle we इसीलिए don't बाबा experience हमारी any काया की sorrow. कल्पतरु कर देते हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14 जनवरी के सार है मीठे बच्चे, Today is 14th अभी January. तुम्हारी काया Essence, बिल्कुल पुरानी sweet हो children, गई। your bodies have now become आप completely आए हैं old. तुम्हारी काया The Father has कल्पवृक्ष come समान बनाने। to make your bodies as तुम immortal आधा as the कल्प kalpa के लिए tree. अमर बनते हो। You will आधा become कल्प immortal के for लिए half a cycle. अमर बनते हो। प्रश्न है, Question: इस वंडरफुल नाटक में which aspect of this wonderful play is well worth understanding? उत्तर है, Answer: नाटक में only once at this time can you see the faces of all the actors of this play. देख सकते। फिर वही चित्र You will see those same faces after 5,000 years. 84 जन्मों के 84 There will be चित्र 84 faces of 84 births, भिन्न and भिन्न each one of them will be different. इवन इस समय कलयुग के अंत में इतनी पॉपुलेशन होते हुए भी एक At this time, in this Kalyug age also, नहीं खाता, लेकिन बाबा each कहते of हैं us have 84 different जन्मों के faces, 84 फीचर्स होंगे और एक न मिले दूसरे से। and each one will be different from one another. कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। Baba says even the actions of one cannot be same as the others and others. वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। Whatever actions are performed, यह बहुत ही those समझने actions की will be बातें repeated हैं। after 5,000 years. तुम बच्चों की These बुद्धि का aspects are really ताला worth अभी खुला है। understanding. Now that the locks on the intellects of you children have opened, you can explain these secrets to everyone. गीत है, Song: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। The Innocent Lord is unique. Om Shanti. भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है। Only Shiv Baba is called the Innocent Lord. Shankar वह cannot be तो called विनाश that. करता है और He शिव destroys, whereas स्थापना करते हैं। Shiv Baba creates. यह तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश It is definitely heaven,
that is created and hell ज्ञान that is सागर destroyed. भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। Therefore, only Shiv Baba can be called the innocent Lord, the ocean of knowledge. जरूर You कल्प children are पहले now भी शिव experienced. बाबा आया होगा, Surely, और अब आया Shiv है Baba जरूर। must have come in the previous cycle, उनको आना and जरूर है। he has definitely क्यों come आना now. है बाबा को? He definitely has to come नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। because he has to create इस the ड्रामा human world के anew. आदि मध्य अंत का राज बताना है। He has to tell बाबा you को the क्यों आना है? secrets of the क्योंकि ये beginning, सृष्टि का the middle, राज भी and the बताना end है, of this इसीलिए drama. जरूर यहाँ आना है। And so, he definitely सूक्ष्म has वतन to में तो come नहीं here. बताएंगे। He cannot tell तो you बाबा सूक्ष्म in the वतन subtle में नहीं region. बताएंगे। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की भाषा The अलग है। language of the subtle region मूल is वतन में different, तो भाषा है नहीं, and there is no language in the incorporeal world. तो यहाँ ही आकर के बाबा Here, it राज is a बताते हैं। talkie. शिव बाबा ही बिगड़ी को Shiv बनाने Baba वाला है। is the one who reforms that जब which सृष्टि has been तमो spoiled. प्रधान हो जाती है, God, the one तो who grants सबको salvation to सद्गति all, देने वाला says, भगवान I have to कहते हैं come when the world कि becomes मुझे आना Tamo पड़ता है। Pradhan. यादगार भी यहाँ है। His memorials are also इस here. नाटक में The जो faces जो of मनुष्य every के human being चित्र in this हैं, play can only वह be एक ही seen बार देख once. सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी Even the नारायण faces जी of को Lakshmi सत्युग के and समय Narayan कभी भी cannot कहाँ be देख seen सकते हैं? anywhere other than in the golden चाहे age. यहाँ बनाए भी लक्ष्मी नारायण, लेकिन फिर भी सत्युग जैसे लक्ष्मी नारायण तो नहीं बना सकते। वह पुनः जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। When they take rebirth, वही their लक्ष्मी names नारायण का and रूप forms will be एक बार different. देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। Once you have seen the जैसे forms of गांधी Lakshmi का and Narayan, बहुचित्र you will में not see those same form 5000 again वर्ष के for बाद another देखेंगे। 5000 years. अथाह Just as you will रहस्य only है, see the exact same जो faces भी of मनुष्य के Gandhi चित्र after अब 5000 देखे हैं, years. वह फिर There are countless human 5000 beings. वर्ष के बाद देखेंगे। Only after 5000 years you will 84 again see जन्मों the के लिए faces 84 of the चित्र human beings देखेंगे that you have seen now. और There सभी will be भिन्न भिन्न 84 होंगे। faces of 84 84 चित्र births, बनेंगे और वो and सभी each भिन्न one of भिन्न them होंगे। will be different. कर्म भी इसके साथ मिल नहीं Even the सकते। actions of one cannot be the same जिसने as जो कर्म another's. किया, Whatever वही कर्म actions 5000 one वर्ष के performs, बाद फिर those same करेंगे। actions will be repeated after लेकिन आज 5000 का years. कर्म भी सेम कल रिपीट नहीं होगा, तो हमारे कर्म किसी और के साथ तो कैसे मेल खाते हैं? यह बहुत समझने की बातें हैं। These aspects are well worth हम understanding. समझते हैं जरूर There is पहले the image of सृष्टि Baba. रचने वह आया होगा। You understand that he must definitely have come first to create the world. तब तुम समझते हो। Now that the locks on your intellects have opened, you can understand. ताला खोलना है। You now also have to open the locks of others in this way. जैसे तुम भी The incorporeal Father must surely reside in the Supreme Abode. पहले जब मैं आता हूँ You also reside there with me. बाबा किसको लाते हैं? When I first come, पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। when I first come, Brahma, Vishnu, and Shankar are with me. मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है। The human world already exists. So, how does it turn and how does it repeat? जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, The subtle region has to be created first, and then
he has to come into the physical world मनुष्य जो देवता थे because the human beings who are to become deities have now उनको फिर become ब्राह्मण से Shudras. देवता बनाना पड़े They first have to become Brahmins जो कल्प पहले and then मैंने ज्ञान be दिया made into था deities. फिर वही रिपीट करूंगा So, I repeat the knowledge that I gave you in the previous cycle. वही ज्ञान मैं अब रिपीट करूंगा इस समय बैठ राज योग सिखाता हूँ It is at this time that I sit and teach Raj Yoga. होती है Then, after half a cycle, devotion begins. कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है The Father himself sits here and explains how the old world becomes new मनुष्य समझते and how at the end it starts again at the beginning. था परंतु People understand that the Supreme Soul came, but they do not know when or how he came. नहीं जानते इतना जानते हैं कि भगवान कभी न कभी People understand that the Supreme Soul came, but they do not know वो नहीं जानते when or how he came. बाबा कहते हैं फिर मैं सम्मुख They don't know how he revealed the secrets of the beginning, the middle, and the end. The Father says, I have come personally to grant you salvation. तो बिगड़ी को Maya, Ravan has spoiled everyone's fortune. So, someone is definitely needed to reform that which has been spoiled. ब्रह्मा तन में The Father says, I came in the body of Brahma 5000 years ago as well. The human world is created here. कर सृष्टि I come here to change the world and make your bodies as immortal as the Kalpa tree. काया बिल्कुल पुरानी हो गई Your bodies have now become totally old. ऐसा बनाते हैं Baba makes them immortal for half a cycle. जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते You can change your bodies there, पर शरीर बदलते हो but you do it happily. सत्युग त्रेता युग In Satyug and Treta Yuga, लेकिन वहाँ दुख you do change your bodies there, but you do it happily छोड़ नया लेते हैं because you shed one old costume and take on a new one. सत्युग में त्रेता युग में ये नहीं कहेंगे फलाना मर गया There you will not say that so and so has died. शरीर छोड़ा आत्मा ने चोला बदली किया तो बाबा कहते हैं उनको It is not called death there. जैसे तुम्हारा Similarly, you have died alive here. तुम मरे थोड़े ही हो It is not that you have really died, तो शिव बाबा के बने but that you have made yourself belong to Shiv Baba. तुम मेरे नूरे रत्ना Baba says, You are the light of my eyes. शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं और प्यार से बाबा कहते तुम मेरे नूरे रत्ना हो Shiv Baba says, You are the light of my eyes. अभी तुम कहते हो The long lost and now found children. भी वही हो ना Shiv Baba says this, and Brahma Baba also says this. आकर मिले That one is the incorporeal father, and this one is the corporeal father. You also say, Baba, you are the same one, and we are the same children who have come to meet you again. The Father says, I have come and established heaven. फिर इस ज्ञान की You definitely need a kingdom, and so I teach you Raj Yoga. मंत्र आदि सब You will receive the kingdom at the end. There will then no need for this knowledge. जैसे All of those scripture etc. will be useful on the path of devotion. भी लिख जाते हैं People will then continue to study them just as when an important person writes the history and geography of somewhere, others continue to read it. स्वर्ग में
There are innumerable books. वहाँ कोई People continue to read them. करके नहीं जाएगा। There will be nothing like that in heaven. There will be only one language. मैं आया हूँ So, Baba says, I have come to renew the world. पहले नई थी, Previously, it was new पुरानी हो गई। and it has now become old. मेरे सब पुत्रों को, Maya, बाबा कहते हैं, मेरे सब बच्चों को माया ने जलाए राख कर Maya has burnt all my sons and turned them into ashes. सहस्त्र बच्चे राख हो गए। They show them as the children of King Sagar, ये तुम बच्चे, the ocean. That is correct. बच्चे तो But वास्तव में सब you are the children of ocean of knowledge. की आत्माएं बाबा के He truly is the ocean of knowledge. In fact, all are his children. सभी बच्चे हैं, परंतु But it is you who are remembered in the practical form. तुम्हारे कारण ही बाप आते It is because of you that the Father comes. चाहिए कि बाबा हमारे You should have this intoxication that Baba has come because of me. से तुम बच्चों को सुरक्षित करने, जो बिल्कुल He says, I have come to make you children conscious again. उनको I come once again to make those who have become totally ugly and with stone intellects into those with the divine intellects. पारस बुद्धि कैसे बनते हैं, You understand how your intellects are made divine with this knowledge. तब यह दुनिया भी When your intellects become divine, पूरी से this world will also change from the land of stone into the land of divinity. में रहने वाले अगर पारस बुद्धि हो गए तो दुनिया भी तो पारस पूरी चाहिए, जिसके लिए बाबा पुरुष Baba continues to inspire you to make effort for this. जरूर मनुष्य सृष्टि रचने So, Baba would definitely have to come here to create the human world. जिसके तन में आते हैं, He creates the mouth-born progeny through the one whose body he enters. So, this one becomes the mother. है तो यह This is such a deep aspect. बाबा आते हैं He is a male. So, the idea of him becoming the mother when Baba enters him will definitely confuse people. लेकिन इसमें बाबा कहते मुझेंगे, तुम सिद्ध कर बताते हो, You prove it by showing this mother and father, Brahma and Saraswati, both sitting beneath the Kalpa tree and studying Raj Yoga. उन्हों का गुरु चाहिए। So, they definitely need a guru. सभी Brahma, Saraswati, and all the children are known as Raj Rishis. You have yoga in order to claim the kingdom. योग और ज्ञान सिखाते हैं, The Father comes and teaches Raj Yoga and knowledge which no one else can teach. योग सिखा न सके, क्यों? Others do not practice Raj Yoga. बाबा कहते हैं क्योंकि राजयोग सिखाने के बाद वो तो लोप हो जाता है, तो और कोई कैसे सिखा सकता है? न कोई They simply say, वह तो सिर्फ study yoga. There are various types of Hatha Yoga. हठयोग तो अनेक प्रकार के होते हैं, No one else can teach Raj Yoga. भगवान ने आप God came and taught Raj Yoga. कहते हैं He says, I have to come every cycle when it is the time to create the new world anew. तो होती नहीं, When it is time to create the human world anew. तो फिर आवे किसमें? There is never total annihilation. हो जाए तो बाबा कहते फिर वो आवे किसमें? निराकार क्या आकर करेंगे? If annihilation took place, whom would I enter? तो पहले से ही है, What would the incorporeal one come
and do. बुलाते भी हैं। The Father explains the world already exists. भगवान The devotees also exist. हैं। They call out to God. आना ही तब है जब This proves that there are devotees as well. तो बहुत दुखी हैं। God has to come at the end of the Iron Age when all the devotees are very unhappy. तभी मुझे I have to come here. I have to come when the kingdom of Ravan is about to end. Everyone is definitely unhappy at this time. The Mahabharata war is standing ahead. ऑब्जेक्ट है। This is a school. तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण Here there is an aim and objective. सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ। You understand that there was the kingdom of Lakshmi and Narayan in the golden age. फिर राजा Then came the kingdom of those with a single crown. हुए। Later, there was expansion of other religions. हो गया। Then, in order for the kingdoms to increase, there were wars, etc. नारायण का राज्य You understand that whatever has passed will repeat again. The kingdom of Lakshmi and Narayan will then begin. Baba explains all the secrets of the history and geography of the world. जानते हैं There is no need to go into detail. You understand that you, हम सूर्य वंश who belong to the Sun dynasty, will definitely take rebirth in the Sun dynasty. नाम रूप तो बदलती हो। Your names and forms will change, बाप भी दूसरे and you will also have different mothers and fathers. बुद्धि में रखना है। You have to keep this entire drama in your intellects. वह भी समझ लिया। You have now understood how the Father comes. का ज्ञान है। People have the knowledge of the old Gita in their intellects. पुराना गीता का ज्ञान था। Previously, आप गुह्य बातें सुनाते हैं। previously, we too had the knowledge of that old Gita in our intellects. Now, after hearing such deep aspects, we have come to understand the whole significance of everything. People also say that previously your knowledge was different, and that it is now and that it is now very good. हाँ, जो सबकी बुद्धि में बैठता नहीं था, लेकिन अभी जो ज्ञान है वो समझते हैं बहुत अच्छा है। अब समझ गए हैं कि कैसे You have now understood how to live in your households and yet remain like a lotus. मरना भी सबको है। This is the last birth of everyone. बाप कहते हैं तुम पवित्र Everyone has to die. करो तो 21 The unlimited Father himself says, मालिक बनेंगे। promise that you will stay pure and you will then become the masters of heaven for 21 births. Here, even though someone may be a millionaire, he would still be unhappy. प्रधान हैं, उनको कुछ न कुछ रोग आदि लगते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं His body is not pure. "ती नहीं, तुम्हारी Your bodies become pure. You do not die for 21 births. मरते नहीं। बाप कहते हैं The Father says, those who come here are the ones कौन आएंगे? who belong to the Sun and the Moon dynasties. काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं, इसीलिए They became ugly by sitting on the pyre of lust. सब That is why Radhe, Krishna, and Lakshmi भी तो सभी सांवरे and Narayan have been portrayed as ugly. बैठने से सांवरे हो गए हैं। Now everyone has become ugly. काम चिता से उतर They became ugly by sitting on the pyre of lust. विश्व
You now have to get off the pyre of lust and sit on the pyre of knowledge. समझाना ऐसे Cancel the bond of poison and tie a bond of the nectar of knowledge. अब जब तक कुमार Explain in such a way that people say that you are carrying out an auspicious task. Anyone who is a Kumari or a Kumar cannot be called impure. नहीं बनना है The father says you should never become dirty. ढेर आएंगे As time goes by, countless people will come. ज्ञान जीता They will say that this is very good. मालिक बनेंगे By sitting on the pyre of knowledge, we will become the masters of heaven. Mostly, it is Brahmin priests who arrange marriages. The kings also keep Brahmin priests. They are called Rajgurus, in brackets, Gurus of the kingdom. Nowadays, even sannyasis tie bonds. सुनाते हो When you tell people such things of knowledge, they become very happy. लेते हैं They instantly have a rakhi tied. न बना दे लेकिन अभी तो खुशी खुशी से राखी बंधवाते हैं फिर घर में झगड़ा भी होता है कुछ Then there is also quarreling at home. तुम हो You definitely have to tolerate a little. You are the incognito Shakti army. You don't carry any weapons. The goddesses have been portrayed holding many weapons. तुम योग बल से विश्व की बादशाही However, all of those aspects are of knowledge. से हद की राजाई मिलती है Here, these aspects of knowledge of yoga, you claim claim the kingdom of world with the power of yoga. लड़ाई की कोई बात नहीं Only limited kingdoms are taken with the physical power. राजाई देने आया हूँ Only the unlimited master can give the unlimited kingdom. जाने के लिए आया हूँ There is no question of war in this. भी नहीं रहता The father says, how can I instigate a war? करते हैं लड़ाई झगड़े के I have come to put an end to fighting and quarreling, so that not even a trace of that remains. कहते हैं मेरी लाज रखो This is why everyone remembers the Supreme Soul. और को पकड़ते रहते हैं He says, maintain my honor. मैं भी ईश्वर है हमारे में भी ईश्वर है फिर अपने में भी When they have no faith in the one, others catch hold of them. में भी ईश्वर है तो When they have no faith in the one, others catch hold of them. गुरु करते हैं Although they say that God is also in them, they still don't have that faith in themselves. And so they adopt gurus. कल्प पहले भी मैं If God is in you, why should you need to adopt a guru? कल्प पहले भी बाबा आए थे जैसे Here, this is unique. The father says, I came in the previous cycle the same way as I have come now. रचना करते हैं You now understand how the Father, the Creator, sits and creates the creation. तब तक This too is in the drama. How could you understand what is going to happen in the future unless you have understood this cycle? दुनिया से पाठ बचाने आए हैं It is said that this is the field of action. पाठ बचाने आए We have come from the incorporeal world in order to play our parts. डायरेक्टर का Therefore, we should know the creator and the director of the whole drama. दर्श तो जान गए हैं कि यह ड्रामा We actors बना have to come यह सृष्टि कैसे
to know how this drama is created and how expansion of this world takes place. अंत है Since it is now the end of the Iron Age, होना चाहिए। the Golden Age surely has to be created. की समझानी बिल्कुल ठीक है। The explanation of the cycle is absolutely accurate. समझ जाएंगे। Those who belong to the Brahmin clan will understand. तो अपना कुल This one is Prajapita, and so your clan will continue to grow. परिवार बढ़ना तो है ही। It has to grow. पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते Everyone continues to make effort as they did in the previous cycle and observe everything with detachment. हर एक को Each of you should examine your face in your mirror कौन से आईने में देखना है। and ask yourself to what extent you have become worthy of claiming a kingdom in the Golden Age. ये कल्प कल्प की बाजी है। This is a game of every cycle, तुम हो depending on the service each one of you does. You are spiritual unlimited social worker. You follow the directions of the Supreme Spirit. सुप्रीम रूह की मत पर ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण करनी है। Continue to imbibe such beautiful points. के पंजे से छुड़ाते हैं। The Father comes and frees you from the jaws of death. मृत्यु लोक वह है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत There is no mention of death there. This is a land of death, and that is a land of immortality. In this land, there is sorrow from the beginning through middle to end, whereas in that land, there is no trace of sorrow. Acha, to the sweetest, beloved, long lost, and now found children, love, remembrance, and good morning. From the mother, the father, Bap Dada, the spiritual father says Namaste to the spiritual children, and we spiritual children say Namaste to the spiritual father. के लिए मुख्य सार है। Essence for Dharana. हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलते नूरे रत्न हैं। We are the lights of the eyes, the long lost and now found children of both the incorporeal and corporeal fathers. हम जीते जी शिव बाबा के वारिस बने हैं। इस नशे में रह Maintain the intoxication of having become Shiv Baba's has by alive. की राजाएं लेनी है। Second point. पवित्रता Claim the kingdom of the world with the power of yoga. सहन भी करना है। Since you have had a Rakhi tied for purity, you have to tolerate a little. Don't ever become impure. सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा Blessing. May you be an embodiment of happiness while living in this world of sorrow by remaining aware of the Father, the ocean of happiness. दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप Constantly remain aware of the Father, सुख स्वरूप the ocean of happiness, and you will become an embodiment of happiness. अशांति का प्रभाव हो No matter how much influence there is of sorrow and peacelessness in this world, सुख के सागर के you must stay detached and loving. सदा सुखी You are with the ocean of happiness, झूले में झूल and you are therefore constantly happy, swinging in the swing of happiness. You children who are master oceans of happiness सुख के
cannot have any thought of sorrow because you have stepped away from the world of sorrow दुख की दुनिया and से किनारा come कर into the confluence संगम age. पर पहुंच गई सब रस्सियां टूट गई तो सुख All की strings छाया have में been broken, लहराते रहो and so you continue to move along in the waves of ocean of happiness. को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित Slogan: करना ही to stabilize your mind and intellect in one powerful stage मन और is to बुद्धि be in solitude. एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है आज का अव्यक्त इशारा Avyakt जो भी signal: आत्माएं वाणी द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा all souls who come into contact with you through words or through the impact of your practical life, or who hope to come into contact with you, रूहानी शक्ति give का those souls अनुभव the करते experience of spiritual power. जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं Devotees hold a fast of physical food. तो आत्माओं को So, serviceable, knowledgeable souls have to stay beyond the upheaval of waste thoughts, waste words, and wasteful actions, रूहानियत and में रहने take the का vow of being concentrated, तब that is, in the spirituality. ज्ञान सूर्य का Only चमत्कार then you will be able to show souls the miracle of the sun of knowledge. आज का स्वमान है मैं त्रिकालदर्शी आत्मा Today's self respect: और चिंतन है I, the soul, have the knowledge of the beginning, the middle, and the end. में रहने से हमारे Thoughts: संकल्प बोल कर्म what कैसे होंगे is the stage of being in the state of knowing the knowledge of the beginning, middle, and the end? And what thoughts, words, and actions will I have when I am in this stage? संकल्प बोल कर्म करते Practice of yoga. नॉलेज I am an elevated soul. त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर When I अनुभव sit करें in this stage कि जो of knowledge where I have the knowledge of beginning, the middle, and the end, वह और अच्छा all my thoughts, words, actions will be knowledgeful, and I will experience कला का whatever had happened is good, whatever is happening is good, and whatever is to be happen is very good. And by in this remembrance, we have to experience the flying stage. से मनाने वाले हैं पवित्र भारत भूमि Today is the eve of Makar Sankranti, काल में गतिमान होती है तो so we are going to celebrate this special festival. अर्चना के लिए निर्धारित हो जाता है ताकि नीचे उतरती आत्मा दुष्कर्मों से बच सके द्वापर से तपस्वियों ऋषि मुनियों ने खगोलीय घटना को From the age of Copper Age, मनाने की all the sages इन्हीं विशुद्ध खगोलीय परिवर्तनों में से एक है उत्तरायण जिसे मकर संक्रांति कहते हैं ये प्रायः 14 जनवरी को होता है परंतु कभी-कभी नक्षत्रों की विशेष स्थिति से 13 या 15 जनवरी को भी होता है नक्षत्र गणना व ज्योतिष अनुसार सूर्य के वर्ष भर according to the stars and signs, and according to the change in the signs, the date of Makar Sankranti keeps on changing from year after year. पुण्य काल शुरू होता है जो सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है इस काल को परा अपरा विद्या को की प्राप्ति काल भी कहा जाता है कितनी खूबसूरती से भारतीय परंपराओं में उत्तरायण को जहाँ उत्तर व मध्य
दक्षिण भारत में पोंगल व पूर्व भारत में बिहू के नाम से मनाया जाता है और मकर संक्रांति This festival is celebrated throughout the India. में ठंड को विदाई देने की तैयारी की जाती है। लोहड़ी के रूप में और फसल के मौसम के रूप में मनाते हैं। इस गंगा स्नान, इसे दान दक्षिणा का विशेष महत्व तो है ही, साथ ही खिचड़ी को शुभ Especially माना on this गया है। occasion and on दही this special चूड़ा eve, खिचड़ी खाने का कारण माना people जाता go है to holy कि सूर्य की places स्थिति and परिवर्तन take a पर bath नए in the चावल का Ganga. भोग लगाया जाता है। दूसरा, खिचड़ी दही चूड़ा ठंड में विशेषकर पौष व माघ में उदर विकार से मुक्ति दिलाता है, पाचन तंत्र मजबूत करता है, आरोग्य देता है। अतः आप सबको सुस्वास्थ्य हेतु उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। Greetings to every one of you on आज this सभी भाई occasion, on बहनें this special प्रकाश स्तंभ eve. पर आमंत्रित हैं। 10 All the बजे brothers प्रकाश and स्तंभ sisters पर are हमारे invited वरिष्ठ भाई to बहनें प्रकाश आएंगे। स्तंभ आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, आदरणीय at मुन्नी 10 दीदी PM, जी, 10 AM. आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी All our पधारेंगे senior brothers and और sisters will पतंग be उड़ाएंगे coming there, सभी मिलकर के। and everyone will शाम be को flying डायमंड kites. हॉल में 5:30 बजे से योग शुरू होगा 6 बजे तक। Today evening 6 in the बजे से Diamond Hall, 7 बजे तक आदरणीय 5 to रामलोचन भाई 5:30 जी to की 6 क्लास होगी, there's a जिसका meditation. विषय है 6 to एक 7 रस अचल अडोल Ramlochan स्थिति। Baiji's class will be there. 7 से 8 फिर योग चलेगा 7 to 8 और again अभी there's सब meditation. योग के बाद में जो आज की मुख्य टोली है, तिलगुड़ की टोली मिलेगी, बहनों को बहनों की तरफ से, भाइयों को भाइयों की तरफ से। और हमारे brothers and आदरणीय sisters will सतीश be given भाई the जी टोली जो of स्मृति today's दिवस के निमित्त festival. गीत गाते हैं, जिसमें साकार बाबा की स्मृतियां हैं, तो वो अभी हम सबके बीच में बाबा की स्मृतियों को सजाए हुए उस गीत को सुनाएंगे आदरणीय सतीश भाई जी। उसके बाद सूचनाएं छोटी हैं, वो सुन करके जरूर जाएंगे। Now Satish Bhaiji will sing a song on this special occasion. जन जन के मन मंदिर में है मूरत मधुर सुहानी। जन जन के मन मंदिर में है मूरत मधुर सुहानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा आपकी दिव्य कहानी, आपकी दिव्य कहानी जन जन के मन मंदिर में है मूरत मधुर सुहानी। गीता के प्यारे अर्जुन ज्ञानार्जन करना सिखलाया। योगेश्वर योगी जीवन क्या होता हमको बतलाया। हे भागीरथ हमें तपस्या आपने करना सिखलाया। पल में पालन श्रीमत करना त्याग मूर्त कर दिखलाया। शिक्षाओं की चेतन मूर्ति सद्गुण के वरदानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा आपकी दिव्य कहानी, कहानी आपकी दिव्य कहानी। वसुधा पर शिव निराकार ने जिस तन का आधार लिया,
जिसके पावन श्रीमुख से सद्गीता ज्ञान प्रसार किया, अधम से जीवन में ज्ञान गुणों को समा दिया। ओ बाबा, अंगड़ित जीवन को क्या से क्या है बना दिया। झलक आपकी कोटि कोटि मुखड़ों में मिली रूहानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, आपकी दिव्य कहानी आपकी दिव्य कहानी। ओ मधुबन के प्रिय माली, हम बच्चों के प्यारे बाबा, मधुर बोल वो रहे घोल, कानों में है अमृत बाबा। अव्यक्त से भी अव्यक्त हुए, पर दे रहे पालना ओ बाबा। श्वास श्वास प्रतिपल गाते उपकार आपका ओ बाबा, उपकार आपका ओ बाबा। कैसे भूल सकेंगे हम वो आपकी प्रीत पुरानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, आपकी दिव्य कहानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, आपकी दिव्य कहानी। दिन जनवरी 18 हमको आपकी याद दिलाए। अशरीरी अव्यक्त बने हम, आप सा यही सुनाए। देख रहे हैं बच्चे सारे, उन्हें ना हमें दिखाए। संपूर्ण बनो बच्चों आओ, ओ बाबा हमें बुलाए। बाबा हमें बुलाए, बाबा हमें बुलाए। करें तपस्या बने आप सा, करें तपस्या बने आप सा, हमने भी मन में ठानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, आपकी दिव्य कहानी। जन जन के मन मंदिर में है मूरत मधुर सुहानी। ओ पिता श्री ब्रह्मा बाबा, आपकी दिव्य कहानी, आपकी दिव्य कहानी, आपकी दिव्य कहानी। दो सूचनाएं हैं। दिल्ली हरिनगर से संबंधित सेवा केंद्र के सभी सेवाधारी भाई बहनें आज बड़े डाइनिंग हॉल सेकंड फ्लोर में 3:30 बजे मीटिंग में अवश्य पधारें। एक माता का काला बैग जो पंजाब जोन का है, जाते समय ट्रांसपोर्ट में छूट गया था, प्राप्त हुआ है। उसमें लेडीज ड्रेस है, जिसका भी हो खोया पाया विभाग से प्राप्त कर लें।